Assalamualaikum everyone, and a very good morning to you, and all, as well as Juma Mubarak. It's our eighth lecture for accounting and finance, BS Functional English, part one. This is Muhammad Arsalan, your teacher today. How are you doing? I hope that you are doing well because it's been a long week that I did not take your class. So I'll take today two lectures. One is based on connecting devices. The other is on WH questions, inshallah. We scheduled at 11 for the next time. Now let's move to the thing that we were actually doing. What are the connecting devices and why do we use them? Okay, that is the thing. So the connecting devices we have are basically these are known as adverbs and transitions, conjunctions, and prepositions. These are the four words or four elements of functional parts of speech that can make a device called connecting device. Now, if you see on your screens, we can see that from the first lecture, we can find out that here we go. First of all, what is the purpose of using connecting device? Well, the purpose of using connecting device is to connect ideas, not only sentences but ideas. And obviously, to use one connecting device, you need to have two at least ideas that can connect your idea. Up now, if we remember that in our manual classes, we discussed fanboys, and orally we discussed these connectives, and we discussed first fanboys that how to connect two sentences with for, or, and, neither or nor, but, as, yet. How do we use them? Uh, they were helping you with making common nouns or compound sentences. And now we are moving towards more complex sentences. Not only compound sentences, but more complex sentences. I feel that there is a great need for every students to look into this, because when we structure our sentences, whether it's an essay writing or it's the letter writing, you need to develop the skill of having different connectivity. Walaikum assalam, Howard, Ahsanullah, Walaikum assalam. I'm happy to see you there. Okay. Uh, Beta, if you have any questions, do write them. Then I'll be able to answer you at the end of the session. So you can write them. Now, first of all, we need to understand that how two ideas can be connected. So the first sentence is, it was raining. The second sentence is that I did not go out. So in these two sentences, there is an idea that can connect. That it was raining, a reason. I did not go out, my action. So my action depends on reason. So I say that I did not go out because it was raining. So that's what the connection is, connectivity is. Okay. Next, I because it was raining, I did not go out. So it is a mobile. You can use because at the in the middle and at the end of it. Now, let me show you some more connectors, some more complex connectors. Because if you remember that we saw just fanboys in classes. Now we have some more connectors, and these connectors are basically emphasizing one. Above all, in particular, especially significantly, indeed, notably. Indeed is often used when we reply to something or when we are agreeing with someone and emphasizing something. That's the exceptional case, but other adverbs can be used in the first form. Like above all is mostly used in letter writing and essay writing by emphasizing the main point. That above all, it can be concluded that it can be seen that something like this. Okay, okay. I like cheese. I really like cheddar cheese.
I like cheese, in particular cheddar. Okay, I really like really की जगह really क्योंकि कैजुअल वर्ड होता है इनफॉर्मल होता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं in particular. So when we emphasize our point, especially in particular, above all, significantly is something that we use in conclusion as well. Conclusion में above all हम conclusion में use करते हैं. So you can see that. अच्छा जी. Next हमारे पास है comparing connectives equally in the same way, similarly, likewise, as well. ये सारे equal comparisons हैं. Equal comparison समझते हैं ना आप? I have as much work as my brother does or my brother has. दोनों का बराबर है. Yeah, equally in the same way, similarly, likewise, these are used when you want to compare the ideas that are similar or same or equal comparison. I like cheese. I like sausages. I like cheese equally. I like sausages. Okay, sorry मैं इसको देखने एक दफा इन वर्ड्स को. Cause and effects. Because, so, therefore, thus, consequently. अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना है इसमें से कॉज के कौन से हैं और इफेक्ट्स के कौन से हैं. टेक्स्ट कमेंट्स में लिखें कि कॉज वाले कौन से हैं जो कॉज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इफेक्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रीजन को. दे आर फाइव. आर यू देयर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड अस? Yes, I'm looking forward to having your answers because in this way we can have it interactive. Because is the only one that shows causes. On the other hand, so therefore, thus, consequently are same. They rely on uh, action and their outcomes, results. Like for example, अगर मैं बोल रहा हूँ कि because it was raining, I did not go out. तो मैं ये भी कह सकता हूँ it was raining, so I did not go out. It was raining, therefore I did not go out. It was raining, thus I did not go out. It was raining, consequently I did not go out. Okay, so it's kind of a sentences. Most of the people do not work hard, consequently they fail in their test. So you can have that. Okay, that's what you have. Okay, so here we are. These are used when you want to say, अच्छा अब आगे आ जाएंगे हम लोग. Qualifying connectives. However, although, except, if, as long as ये mix कर दिए इन्होंने क्योंकि it's a quick lecture. Okay, I want to see your answers coming. Okay, qualifying connectives they refer to different ideas with different differently linked ideas. जैसे कि however and although they link indirect opposition or
They link indirect opposition. They also link with unexpected results. Okay, so you can go ahead with this and qualifying connectors. However, although except however and although. For example, मैंने कहा well it was raining. However, I went out. However, मतलब unexpected result निकला. Although it was raining, I went out. Although के साथ एक major mistake student करते हैं कि वो when they are writing the sentence of although they use but yet or still तीनों character use नहीं होते. Although के sentence में सिर्फ comma use होता है. Although it was raining, comma we went out. सही है. Although we have worked hard, comma we were not qualified for the team. Although he has been very consistent, he was ignored in the selection. Okay. Although I informed you in advance about the test, you did not prepare. Unexpected. Although and however, indirect opposition or unexpected results के लिए use होता है. Except choices देने के लिए use होता है या separation के लिए use होता है. मैंने कहा कि well I can teach anything uh, except science. Except for science. Except के साथ for भी लग जाता है. EXCEPT pronunciation A double CEPT वाली होती है. Except for science और except science दोनों आ जाता है. इसका जो अल्टरनेटिव होता है except का वो but for होता है. But for पूरा कंबाइन होता है but for I was out, but for he I will invite everybody but for your brother. यानी तुम्हारे ब्रदर को छोड़कर मैं सबको इनवाइट करूंगा. You know if is a conditional conditions को शो करने के लिए यूज होता है. जैसे कि if you work hard you will succeed when two actions depends on when one action depends on the other action. So हम if use करते हैं similarly हम as long as use करते हैं लेकिन as long as के two usages हैं तो पहले मैं इसको clear कर दूँ. If भी मोबाइल कनेक्टिव होता है. If मिडिल में भी आ सकता है. If शुरू में भी आ सकता है. If you work hard you will succeed. You will succeed if you work hard. Comma if you work hard. Okay. सही है. और यूजुअली अगर इफ के साथ क्वेश्चन सेंटेंस बनाओ तो क्वेश्चन पहले आएगा और इफ वाला सेंटेंस क्लॉज बाद में आएगा. कंडीशनल क्लॉज होगा वो पहले आ जाएगा. ओके. जैसे कि और इफ क्लॉज बाद में आएगा. जैसे व्हाट विल यू डू इफ यू आर गिवन अ चांस टू परफॉर्म ऑन द स्टेज. हाउ विल यू रिएक्ट इफ यू हैड $1 billion. ओके. गॉट दैट. I want to see more students joining in. Okay, mobile number Khan has also joined us. If as long as के दो यूसेज होते हैं. As long as का एक यूसेज होता है टाइम कनेक्टिव. जैसे इसके साथ साथ मैंने कहा कि I will be driving और मैंने कहा कि I'll help you as long as I'm here. So yeah, as long as I'm here to it shows the time span that जितनी देर मैं यहाँ पे हूँ. लेकिन ये इसकी लघु यानी लिटरल मीनिंग होती है. यूजुअली किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है प्रोवाइडिंग दैट और प्रोवाइडेड दैट मतलब बशर दिया गया कंडीशन दैट आई विल गिव यू माय कार एज लॉन्ग एज यू ड्राइव स्लोली. मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा लेकिन शर्त ये है कि तुम स्लो चलाना. आई विल हेल्प हिम एज लॉन्ग एज ही स्टार्ट्स वर्किंग हार्ड. तो ये आप देख सकते हैं. हाउएवर ऑल्दो एक्सेप्ट इफ एज लॉन्ग एज. Okay, I would appreciate if you make one or two sentences in your comments. And let me show you the book as well. That will help. This could be one of the books that you'll find helpful. I was looking for it.
if you have this book, this is easily available on the market. It's by Oxford, How English Works. It's the easy one. Then we have John Eastwood, जो कि मैंने आपसे PDF में share करी थी. And then I also shared with you. बल्कि मैं दोबारा share कर लूँगा जॉन ईस्टवुड के अलावा रेमंड मर्फी आप लोगों के पास थी. So I hope that more students are coming in. I'll cut the cheese. You get the knife. I'll cut the cheese as long as you get the knife. जी क्वालिफाइंग के बाद आ जाते हैं. For example, such as, for instance, as required in the case of. Sorry. अच्छा. For example, as for instance, as revealed in the case of, they are all explaining or exemplifying. अच्छा अब याद रखिएगा exemplifying दो exemplify करना writing के अंदर दो चीजों को कहा जाता है. Number one, we exemplify the sampling specimen. जब हम एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि एग्जाम्पल आपके काम में आती है, जैसे यहाँ पे रेड लाइस्टर की एग्जाम्पल दी है. दूसरा एग्जाम्पलिफिकेशन जब होती है जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, यानी हम उसे एलैबोरेट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस और सच एज एलैबोरेशन के लिए भी यूज होता है, एग्जाम्पलीफाइंग के लिए भी यूज होता है. So there are two purposes that these five words deal with, such as one they can exemplify, number two they can uh, you know uh, elaborate a point of view. For example, this is that, this is that. तो आप दो तरह की एग्जाम्पल याद है ना, मैंने राइटिंग में आप लोगों को बताया था कि जब ऐसे राइटिंग आप करेंगे तो दो तरह की एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जाम्पल और एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल जो कि लॉजिकल होती है, जो कि सबके लिए पूरी दुनिया में एक जैसी होती है, irrespective of culture, irrespective of language. उसके एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि ग्लोबल एग्जाम्पल भी कहलाती है. Okay, everybody is here. Okay, you can leave comments if you have any problem. So मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा या बल्कि आप देख लें इसमें दोबारा. राइजिंग कनेक्टिव्स और स्पेसिफाइंग कनेक्टिव भी कहते हैं. नंबर टू, कंपेयरिंग कनेक्टिव. इक्वल कंपैरिजन के हैं. अच्छा, अगर कंपेयर करना हो, अगर इक्वल कंपैरिजन ना हो तो क्या करना होगा? मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले वर्ड यूज करेंगे. एज कंपेयर टू, व्हेन कंपेयर्ड विद, ये वाले. आगे, cause and effect, because, so, therefore, thus, consequently, although, as long as. Let's take for instance, because के alternatives क्या होते हैं? Can you tell me what are the alternatives of because? जी बताइए. What are the alternatives of because? आप बिकॉज के अल्टरनेटिव्स आप नोट कर लें, जितनी देर में ये दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है. नंबर वन, बिकॉज की जगह हम यूज कर सकते हैं सिंस, एज, फॉर. फिर हम यूज कर सकते हैं ड्यू टू, ओइंग टू. ये प्रपोजिशंस होती हैं, ये मिडिल में आती हैं ज्यादातर, हम इससे स्टार्ट नहीं करते सेंटेंस.
Okay. It's not getting connected. I have the list. I don't know why it's not showing in the screen. Trying my best to connect with this is. If I could have a sharing, this is the list of. You will see this list in a while. I hope that it becomes shareable for you. अच्छा, ड्यू टू और ओइंग टू जो होते हैं प्रपोजिशंस होते हैं, और बिकॉज ऑफ भी प्रपोजिशन के तौर पे यूज होता है, तो ये ज्यादा मिडिल में यूज होते हैं। इनको आपने इस तरह याद रखना है। सही है, इन द मिडिल यूज करते हैं लोग। जैसे आई डिड नॉट गो आउट ड्यू टू द फैक्ट दैट इट वाज रेनिंग, ड्यू टू द फैक्ट दैट भी लगा सकते हैं, ओइंग टू द फैक्ट दैट भी लगा सकते हैं, और बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट। लेकिन हम डायरेक्ट यूज करना है तो ड्यू टू प्लेइंग क्रिकेट, ड्यू टू रेनिंग, ड्यू टू के बाद या तो आईजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है या फिर नाउन आता है। ओके। ओके, तो एकेडमिक राइटिंग में हम ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और ओइंग टू से ज़्यादा शुरू नहीं करते, हम प्रिपेयर करते हैं कि हम जो शेयर करें वो उस तरह शेयर करें कि ग्रेट, थैंक यू। नाउ योर स्क्रीन विल बी शेयरेबल। अब विजिबल हो जाएगी आपकी स्क्रीन दोबारा। थैंक यू सो मच। ओके, आई रियली अप्रिशिएट योर आईटी सपोर्ट, दे आर ऑलवेज देयर in your university, particularly in your department. Thank you so much. Okay, cause and effect की अब आप cause and effect इन्होंने मिक्स कर दी हैं दोबारा। देखो, therefore, as a result, consequently, as a consequence, hence, thus, conclusively, in conclusion, inevitably, eventually, ये सब के सब रिजल्ट्स बता रहे हैं। इसमें ऐड कर लो सो भी। ओके, सब ऑर्डिनेट में अब आ जाते हैं हमारे पास वो जो रीजंस देते हैं, उसमें आ जाते हैं बिकॉज, सिंस, एज, देयर बाय, बहुत फॉर्मल होता है। इसमें ऐड कर लो फॉर भी, फॉर। फ्रेज लिंक्स में वही बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, ड्यू टू, लीडिंग टू, ओइंग टू। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू सेम है, इन सब के मायने बिकॉज है। एज अ रिजल्ट ऑफ, लीडिंग टू के मायने है सो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन। Likewise, similarly, in the same way, as, like, similar to। अच्छा, हाउएवर, ये कंट्रास्ट वाले, अब कंट्रास्ट में मैंने बताया था दो तरह के कंट्रास्ट होते हैं, डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट के अंदर हम ज्यादातर दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे कंट्रास्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हिज ब्रदर इज वेरी पोलाइट इन नेचर, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज वेरी रूड, या ही इज रूड, सिंपल। अब कौन कौन से होते हैं वर्ड जो डायरेक्ट कंट्रास्ट को यूज करते हैं? हाउएवर, while, but, on the contrary, in contrast, uh, whereas, ये सब के सब डायरेक्ट कंट्रास्ट, अनलाइक, डायरेक्ट कंट्रास्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट कंट्रास्ट कौन कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट कंट्रास्ट या ऑपोजिशन, उसमें होते हैं ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। अच्छा बेटा, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, ये टाइपो है इसके अंदर। डिस्पाइट ऑफ रॉन्ग है, डिस्पाइट होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, बट
yet still but still का अच्छा nevertheless nonetheless ये indirect contrast की बात करते हैं. अब डायरेक्ट कंट्रास्ट और इनडायरेक्ट कंट्रास्ट में डिफरेंस समझाता हूँ आपको. डायरेक्ट कंट्रास्ट में दो ऑपोजिट चीजें डिस्कस करती हैं. मैंने कहा कराची इज द बिग सिटी. ऑन द अदर हैंड या हाउएवर या while Lahore is small, okay, however both of them are international cities. अच्छा अब ये डायरेक्ट कंट्रास्ट था पहले वाले पार्ट. इनडायरेक्ट कंट्रास्ट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है. मैंने कहा कि बैग वाज एक्सपेंसिव, बैग बहुत एक्सपेंसिव था. रिजल्ट क्या होना चाहिए था, मैंने नहीं खरीदा लेकिन मैंने खरीदा तो मैं क्या बोलूंगा, द बैग वाज एक्सपेंसिव स्टिल आई बॉट इट. द बैग वाज एक्सपेंसिव इवन देन आई बॉट इट. द बैग वाज एक्सपेंसिव despite the fact that I bought it. The bag was expensive, uh, but I bought it. Okay, सरप्राइजिंगली आई बॉट इट. तो हम ये वाले वर्ड यूज करते हैं इनडायरेक्ट कंट्रास्ट देने के लिए या ऑपोजिशन. द बुक वाज इंटरेस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटरेस्टिंग. द बुक डिड नॉट सेल टू मच. बुक की ज्यादा सेल नहीं हुई, बेस्ट सेलर पे नहीं गई. ओके, मैनी YouTube channels in Pakistan provide informative links and a lot of important information despite the fact that they are failed and they don't get views. Okay, जी coming back to the point, contrast and comparison. देखिए मैंने बताया था ना डायरेक्ट कंट्रास्ट, इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कंट्रास्ट के नीचे भी लिख दिया. ऑन द अदर हैंड इट कंट्रास्ट कन्वर्सली irreversibly, while whereas unlike इसमें और ऐड कर लो, बट however ये भी हो जाता है. however दोनों फंक्शन यूज होता है और जिस तरह बट दोनों फंक्शन के लिए यूज होता है. instead of contrast with choice. Okay, I chose to become a teacher instead of joining bank. नेक्स्ट हमारे पास है emphasize. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. in fact, indeed, as a matter of fact, primarily. अच्छा, primarily ज्यादातर वैसे यूज और मोस्ट इम्पोर्टेंटली या मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होता है प्रायोरिटाइजिंग के लिए. यहाँ मेन रीजन भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ. ये प्रायोरिटाइज करने के लिए यूज होता है. इनिशियली, प्राइमरली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, apparently ज्यादा हम यूज करते हैं इसके लिए. कंफर्मेशन के लिए टिपिकली, usually, traditionally, normally, naturally, clearly, in accordance with it, confirms. That shows, generalization and as well as confirmation. Clarification, that's the favorite one. In other words, that is to sum up, in summary, summing up. To put it in that way. तो ये जब आप किसी को क्लैरिफाई कर रहे होते हैं कोई पार्ट. Okay, yes, we have been joined by some other students. Mavish is also here, and there are. I would like you to, raise your queries rather than saying Assalamu alaikum or hi. Uh, you should say if your queries are. For example, इसको मैं समझा देता हूँ. The boy knocked himself down by jumping. In other words, he got unconscious. Okay, that is, he got unconscious. To sum up, he felt fainted or he got fainted. तो मैं explanation दे रहा हूँ. Generalization के लिए in general, generally speaking, in broader context, in broader perspective. मैंने कहा in broader perspective, we have good students, but they are not guided. They may perform well out of the box. They always think out of the box. Specialization और ये जो होता है emphasize, ये एक ही होता है. जी, additional information, एक पॉजिटिव में दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड करना. मैंने कहा टेलीविजन provides us controlled and filtered news. In addition to this, some expert based talk shows. या moreover expert based talk shows. अच्छा जी, continuation of in this context, in this connection, in this regard, in this respect, in this perspective, here with हम ये भी यूज कर सकते हैं. In this context, in this we are trying to relate. हम relate करना चाह रहे हैं अपनी explanation को.
Conditions मैंने बता दिया था in that case, otherwise now given, if provided that, when, while, until, as long as, now that, once that. They are all conditional or time related. When you meet them, pay my regards. अच्छा, when, while, as long as, now that, provided that, if, इन सब सेंटेंस में हम फ्यूचर यूज नहीं करते, यानी विल का फ्रेज हम यूज नहीं करते, वी डोंट यूज विल। इसका प्रेजेंट टेंस ही फ्यूचर के काम में आ रहा होता है, ना विल यूज करते ना वुड यूज करते। रिजल्ट क्लॉज में हम विल और वुड यूज करते हैं। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, इफ यू आर हियर टुमारो आई विल बी हियर। ओके, इफ यू आर हियर मतलब अगर तुम कल होगे, उर्दू ऑब्वियसली जो भी करना है, इफ यू विल बी हियर रॉन्ग होगा। I will give him my car provided that he drives slowly, not he will drive slowly. Okay, got it? अच्छा, without conditions, जिस तरह condition के होते हैं, इस तरह without conditions भी होते हैं। Even though, regardless of, despite, regardless, irrespective of भी होता है इसमें, irrespective of। Okay, example के लिए ये है, अच्छा जी, reintroduction, regarding, for, in connection with, focusing on, with respect to। ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि यू पुट थिंग्स इन ऑर्डर। इसमें आप ऐड कर लें, मैं ओरली बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, थर्ड ऑफ ऑल, ये बहुत अच्छा होता है। प्राइमरीली, सेकेंडरीली, इनिशियली, देन, इन द बिगिनिंग, सेकेंडली, नेक्स्ट, एंड देन, ये वाले वर्ड आफ्टर वर्ड्स ये भी यूज होते हैं। देखिए, दैट्स ऑल अबाउट योर कनेक्टिंग डिवाइसेस। आई होप दैट if you have any query, then आप the next हमारा lesson है, that will be smaller, but 40 minutes, but it will be based on mostly on WH questions and the tag questions, how to create questions, what to do with the questions. So you can ask me those questions with these connecting devices, and for this we are here. We're done with it. These are our connecting devices, and they will help you make new sentences, connect new ideas, connecting different ideas depending on what kind of ideas you are dealing with. That's what you are. Similarly, I would like you to practice those sentences from those books. एक बुक मैंने बताई है जॉन ईस्टवुड की ग्रामर की बुक, वो भी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ दोबारा। और ग्रामर मर्फी आप लोगों के पास तो है ही, हार्ड फॉर्म में भी थी आपके पास और आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में। थैंक यू सो मच। Finally, if you have any query or questions, please do this. You have 4 to 5 minutes. Please write in comments. I would like to answer your queries on this. क्योंकि कनेक्टिंग डिवाइस एक ऐसा है जो कि आपकी जो असाइनमेंट है उसमें चेक होगा, खासतौर पर असाइनमेंट नंबर 1 और जो लेटर राइटिंग असाइनमेंट है वो, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। Okay, I hope that you have any questions so that we finish this talk. I don't see any questions coming, so let's call it a day, and then we'll be rejoined at 11:05। 11:05 पर हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, which will be very important because आपका एक टास्क है WH questions का, तो वो WH questions के बारे में, what, where, when, why, and how to use them, how to interact with these questions, what is the difference between tag questions. Thank you.